with some examples and explanation, I will elaborate on the prominent tropes employed to tickle the funny bones at the expense of Hindu sentiments. We will understand how the world's oldest belief system, Hinduism, has transformed into a hilariously marketable product in the Indian stand-up comedy space. The most relevant trope, that is mistranslation, denigration of symbol and icon, cultural appropriation, is employed by 83% of the act. In one instance, Surlin Kaur, a female comedian, labeled the followers of ISKCON tradition as porn addicts simply with the logic that the name ISKCON rhymes with the word porn. मजाक में भी एक हिंदू पंथ की ऐसी नकारात्मक तुलना हिंदुओं के बारे में न केवल गलत विचारों को बढ़ावा देती है, पर उनको सार्वजनिक स्थानों पर हास्य का मुद्दा या तिरस्कार का शिकार बनाती है। यहाँ तक कि इस स्टैंड अप एक्ट में यह महिला हास्यकार ने ऋषि मुनि और हिंदुओं के लिए अनुचित शब्द का प्रयोग भी किया था, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। Another well-known Indian American comedian, Veer Das, made joke about Lord Ganesh, one of the most revered deity in Hinduism. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है और उनकी विशेषता हाथी के सिर वाला उनका स्वरूप है। इस हास्यकार ने भगवान गणेश के हाथी के सिर वाले स्वरूप को प्लास्टिक सर्जरी गलत है या डिज्नी द्वारा प्रस्तुत हिंदू धर्म कहकर मजाक उड़ाने का प्रयास किया। It should be noted that this joke was made on an international platform in San Francisco. विदेशी भूमि पर एक शो में जहां हिंदुओं का इतिहास जानने वाले लोग शायद ही होंगे, वहां इस प्रकार का मजाक क्या उन लोगों के लिए अपमानजनक नहीं है जो दिन में 10 बार श्री गणेश बोलकर अपना काम करते होंगे? जब एक मूल भारतीय अपने इतिहास और देवताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजाक बना सकता है और अपमान करता है, तो वहां बैठे विदेशी जनता को क्या वो यह संदेश नहीं दे रहा कि सनातन धर्म तर्कहीन है और भारतीय लोग प्रिमिटिव है? तीसरा उदाहरण है कॉमेडियन कैनी सेबेस्टियन का, जो जिनको दिवाली से शायद कोई लेना-देना नहीं है, पर दिवाली और हिंदू धर्म के नव वर्ष पर फूटने वाले पटाखों से अत्यंत समस्या है। इसीलिए वो दिवाली पर फूटने वाले पटाखों को अदर शिट कह के संबोधित करते हैं। और यहाँ तक कि इनके मुताबिक दिवाली पर पटाखे फोड़ना तर्कहीन है और पटाखे फोड़ना वाले लोगों को चाँटा मारकर रोकना चाहिए। Maybe this was a joke and a comic story and the audience too would have laughed out. However, Kenny Sebastian, he conveniently ignores the noise and pollution caused by fireworks during grand celebration and tournaments. This and during other faiths, religious celebration. This selective criticism and cultural appropriation of Hinduism raises question about environmental concerns and the freedom to joke about faith, as it seems to be driven by bias against the Hindu community and Hinduism. यहाँ सब लाइक देखकर ऐसा लगता है कि पर्यावरण के प्रति इन हास्यकारों की चिंता और किसी की आस्था पर मजाक करने की आज़ादी तब भी उभरती है जब वह मुद्दा हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म का हो। So these were the three examples how in stand-up comedy Hinduism is mistranslated, religious symbols and icons are denigrated, and cultural appropriation is promoted. The second most relevant trope, that is insult to deities, destruction of symbols, their festivals, and religious and cultural practices, was also found in 83% of the acts. So, in like one stand-up comedy, Alokesh Sinha compares the Hanuman Chalisa, one of the most sacred Hindu prayer recited daily by 500 million Hindus in India, to an ineffective antiseptic. सो यहाँ विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या लाखों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की कीमत चंद हंसी के सामने शून्य है? Another instance involves a comedian, Atif Mohammed Aziz, mocking the Ram Mandir and its movement. यहाँ हास्य कलाकार कहता है कि राम लल्ला आएंगे, इमेजी का यही बनाएंगे। अपने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले हिंदुओं द्वारा किए गए बलिदानों को अनदेखा कर मंदिर की तुलना एक मनोरंजन पार्क से की गई है। While mocking such jokes, the comedian tends to ignore the suffering and persecution of Hindus in their own land. So, in the third example, a comedian, Alexander Babu, made sexualized reference to goddess Ma Parvati. It is worth noting that among the major religion in the world, Hinduism stands out in worshipping female deities and recognition of feminine divinity. सभी धर्मों में जहाँ हिंदू धर्म देवियों की पूजा करने में अलग पहचान रखता है, वहाँ हिंदू देवियों का मजाक एक सामूहिक लोक मंच से खुद के खुद को हास्य कलाकार कहने वाले बनाते हैं।
On one hand, when the world has taken its first step towards feminism and is talking about women rights, at the same time, there is Hinduism, which has been talking about feminine power and worshipping Shakti since yugas. So these were the three examples how in stand-up comedy, deities are being insulted in the form of jokes. The third most prominent trope identified is erasing, mocking Hindu views of Indian history. So, in one example, a stand-up comedian again, Alexander Babu, equates Hindu scriptures to Wikipedia, thereby diminishing the depthness and richness of the sacred text. This comparison not only undermines the vastness of Hindu scriptures, but also questions their accuracy in relation to Wikipedia pages. जैसे विकिपीडिया से जानकारी प्राप्त करने पर विश्वसनीयता संदिग्ध हो सकती है क्योंकि वहाँ किसी भी विषय पर कोई भी जानकारी संपादित कर सकता है। वैसे ही हिंदू ग्रंथों की विकिपीडिया से तुलना लाइक कर उनकी सत्यता पर हास्य की परछाई में सवाल उठाया जाता है। इन द शैडोज ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स इज क्वेश्चनड with comparison to Wikipedia. Another example involves Vedas referring to Hindu polytheism as avengers by Hinduism, like mocking the belief in multiple deities by linking Hindu gods to comic book characters. हिंदू धर्म के लोग सूर्य देव, चंद्र देव, समुद्र देव ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं। इस विविधता को कॉमिक बुक के पात्रों से देवी देवता की तुलना की गई है। शायद हास्य कलाकार महोदय वीरदास यह कहना चाहते हैं कि कॉमिक बुक कैरेक्टर की तरह हिंदू देवी देवता काल्पनिक है और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। Furthermore, there is an instance where Kunal Kamra mocks Hindus for expressing concern about persecution by claiming that Hindus are in not in danger, but rather the logic is in danger. Like comedian dismisses the legitimate threat faced by Hindus from various forces. Such mockery undermines the reality of challenges faced by the Hindu community across the globe, from persecution of Hindus in Pakistan, Bangladesh, or be it with the most recent in Sandesh Khali, West Bengal. Such comedians bravely jokes about Hindus being illogical for being vocal about their persecution, but comedian lacks courage to speak when it comes to Hindu rights. This shows a clear bias in their opinions. So these are the three examples of how Hindu history and views are mocked and systematically erased, calling them illogical through stand-up acts. The fourth prominent trope identified in analysis is the projection of Hindus as lacking self-control, engaging in irrational actions, and being superstitious. So, a female comedian, Radhika Vaz, asserts that Hindus have not evolved simply because women observe the auspicious fasting tradition called Karwa Chauth. So, this fasting is labeled as irrational and superstitious. It's worth noting that fasting is a spiritual practice observed in numerous religions across the world, but it is called out irrational when it comes to Hindus. यहाँ तक कि यह महिला हास्यकार ने करवा चौथ के लिए एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया था, वो भी एक सार्वजनिक मंच से जो मैं यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। In yet another example, Vedas mocks the reverence for cows in Hinduism, suggesting that not consuming beef makes Hindus unprogressive. Like it is important to recognize that dietary restriction, both as a matter of choice and those based on religious, spiritual, and cultural beliefs, exist worldwide. But singling out Hindus for not consuming beef demonstrates the bias. So अपने आस्था या मानता का सम्मान रखने, व्रत रखना हो या कुछ प्रकार का आहार का त्याग करना हो, ऐसी श्रद्धा सभी प्रमुख धर्मों में है। पर हास्य के मंच से केवल हिंदू धर्म को अंधश्रद्धालु और तर्कहीन बताना इन कलाकारों का पक्षपात प्रदर्शित करता है। So these were few examples how Hindus are projected illogical and superstitious in the stand-up acts. The fifth most prominent trope identified is use of propaganda, dehumanization, demonization tactics against Hindus and Hinduism. So Kunal Kamra in the stand-up act refers to Hindus sacred chanting Jai Mata Di as unscientific while narrating an apocalyptic story. While the scientific nature of any chant can be debated, labeling it as unscientific can be seen as propagandist techniques aimed at portraying Hindus who rely on chanting during challenging period as inherently irrational. So, in another example, Munawar Faruqi narrates communal incidents, that is the 2002 Godhra riots, while deliberately ignoring primary victims, Hindus, and refraining from highlighting their experience of religious conflict. So, the intentional omission paints an incomplete and biased picture aiming to demonize Hindus
and portray them solely as oppressors, disregarding their own status as primary victims.